what? Isomer means that is same chemical formula but different arrangement of their constitute atom, and the phenomena is called as isomerism. तो आइसोमर जो होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉरी और क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो आइसोमेरिज्म है, सो वो ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मतलब डेफिनेशन सेम ही होता है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, पर जो एटम का कनेक्टिविटी हो या फिर एटम का स्पेशल ओरिएंटेशन हो वो डिफाइंड होगा. ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बोलते हैं, तो क्वेश्चन केमिस्ट्री में वी हैव टू say about cohesion compound. So that's why in cohesion compound, that is the same molecular formula is found, but defined structure and arrangement can be there of the atom. So this is called as isomerism, and the compounds, respective compounds which show isomerism, they are called as isomer. Okay. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम पर एटम का कनेक्टिविटी डिफाइंड. ठीक है. या फिर आपका एटम का स्पेशल ओरिएंटेशन डिफाइंड, या फिर आपका एटम का जो डोनर एटम होता है वो डिफाइंड होता है, पर सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, पर स्टिल दिस टाइप ऑफ वेरिएशन कैन बी देयर. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड शोइंग आइसोमेरिज्म, एंड जो रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर ए आइसोमेरिज्म शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर. ओके, क्लियर. देखो एक बात सुनो, आइसोमेरिज्म जो होता है वो ऐसा भी हो सकता है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, सपोज कोबाल्ट Cl3 6NH3, कोबाल्ट Cl3 5NH3, कोबाल्ट Cl3 4NH3, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. वहाँ पर सिर्फ एक ही फर्क होता है, ओनली वन डिफरेंस इज देयर, दैट इज H2O. ओके. कुछ केस में H2O इनसाइड ऑफ द कोहेशन पेयर, कुछ केस में H2O आउटसाइड ऑफ द कोहेशन पेयर, एंड द नंबर ऑफ H2 दैट शुड बी वैरीज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कोहेशन पेयर. Okay, so that's why the isomerism can be happen. So this is also considered as isomerism. Okay, so some isomerism can also be that type, that is cobalt Cl3 6NH3, cobalt Cl3 5NH3, cobalt Cl3 4NH3, where only the deviation, only the difference is water. That is water, the number of water present inside of cohesion pair or outside of cohesion pair. With respect to that, we can found so many structure. So that is also considered as isomerism. Okay. Simple thing, many complex compound where cyanide is there. So cyanide, we know there must be carbon can also be act as donor, nitrogen can also be act as donor. So both can be act as donor. So with respect to metal is there must be, if you get, there must be two type of structure on depend on the donor atom. So that can also be considered as what? Isomerism. Okay. And also not only that, if there must be only cis trans or FACMA, this type of orientation is there, only the special orientation differ, that is also called isomerism. Okay. So isomerism main fundamental thing, that is their molecular formula will be same, but is there must be some difference in structure will be there. Okay. So, since the atom are arranged differently, therefore isomers are defined compound with defined reactivity. Obviously, because the atom connectivity defined, so the structure is not identical. So, obviously having some chemical and physical properties that should be defined. Okay, so physical or chemical properties होगा वो somehow कुछ defined होगा. Now that is defined physical properties, that is color, melting point, boiling point, that also be defined, because obviously chemical properties of change, so obviously physical property can also be changed, because आपका physical property सबसे पहले deviate होता है. केमिकल प्रॉपर्टी आपका कभी कभी इंटैक्ट जैसा रहता है वैसा ही सेम रहता है, पर फिजिकल जो आपका प्रॉपर्टीज होता है वो ज़्यादा वेरिएबल होता है. मतलब क्या होता है, सोचो कोई भी आप ट्रांजिशन कर रहे हो, कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हो, सबसे पहले आप प्रेडिक्ट करोगे फिजिकल चेंज. ज़्यादातर फिजिकल चेंज पहले होता है, फिजिकल चेंज होता ही है. केमिकल चेंज अगर ना भी हो, फिजिकल चेंज होता है. तो ऐसा होता है कि आपका फिजिकल चेंज होने का चांस ज़्यादा होता है देन केमिकल चेंज. ओके, पर यस रिवर्स भी कैन, एक्सेप्शन भी ऑलवेज देयर. ओके, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ केमिकल चेंज, वो भी हो सकता है. आप लोग का जो केमिस्ट्री, हम लोग का जो केमिस्ट्री वहाँ पर लेबोरेटरी बेस्ड सब्जेक्ट,
So that's why many things can be happen in the laboratory, many things can be established, many things can be happen. Okay. So now isomerism basically two types. One is structure isomerism, other is stereoisomer. This here should be structural isomerism. This all classification are structure isomerism, and this is stereoisomerism. In structural isomerism, the bond connectivity should be defined. आपका जो एटम कनेक्टिविटी होगा वो डेविएट करेगा, ठीक है. पर स्टीरियोआइसोमर में बॉन्ड कनेक्टिविटी दैट शुड बी सेम बट that spatial orientation should be defined. Okay, bond connectivity that should be same, but spatial orientation that should be defined. So structure isomer, there must be certain classifications are there. First one, ionization isomerism, then hydrate isomerism, then linkage isomerism, then cohesion pair cohesion isomerism, then cohesion position isomerism, ligand isomerism, and last one, polymerization isomerism. This type of isomerism can be there. First one, ionizing isomerism. In this isomer is exchange of ligand of cohesion pair and ionization pair. आपका cohesion pair में एक एटम है, आयनाइजिंग स्पेयर में एक एटम है. जैसे आपका यहाँ पर Br है, यहाँ पर SO4 है, ठीक है. तो ऐसे ही आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला दूसरा एक कंपाउंड होता है जहाँ पर आपका SO4 अंदर है, Br बाहर में है, ठीक है. दैट कैन ऑल्सो बी हैपन. Okay, same molecular formula, but the two group that should be position are defined. In first one, Br is present inside of the cohesion pair, SO4 that should be present outside of the cohesion pair, and in second case, that is SO4 is present inside of the cohesion pair, and that is inside of cohesion pair, and Br is outside of the cohesion pair. This is the difference, but the molecular formula is same. And that's why their physical and chemical property that also be changes. Why? Because if you incorporate Ba2 plus in that compound, there must be SO4 is present outside of the pair. So obviously which is present outside of the pair, that should be bind with Ba2 plus. ओके जो आपका बाहर में है वो Ba2 प्लस के साथ बाइंड होगा, तो इसलिए BaSO4 white PPT should be produced. Okay, but here Ba2 plus, when you introduce Ba2 plus only react with SO4 2 minus, but SO4 2 minus present inside of the cohesion pair, so never be reactive. Okay, SO4 inside में है वो Ba2 plus के साथ react नहीं करेगा, Ba2 plus के साथ Br नहीं, SO4 2 minus ही react करता है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर no PPT. Okay, this is the defines in chemical properties. Okay, in chemical reaction. दूसरा आपका जो होता है Ag+ आप दे दो, Ag+ SO4 के साथ बाइंड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि Ag+ मतलब पीपीटी नहीं फॉर्म करता है, बाइंड नहीं होता है ऐसा नहीं, पीपीटी नहीं फॉर्म करता है. पर AgBr के साथ Ag+ पीपीटी प्रोड्यूस करता है, AgBr ग्रीन कलर्ड पीपीटी. ओके, तो आप जब भी आप व्हाइट पीपीटी देखोगे दैट मीन्स SO4 शुड बी प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ द कोहेशन पेयर, दैट मीन्स इन आयनाइजिंग पेयर. Okay, or when you see that is AgBr as a green colored PPT, that means Br is present outside of the cohesion pair, outside of the third bracket. Okay. Next one, hydrate isomerism. That is, there must be water molecule. That should be the position of water molecule, the number of water molecule that should be present inside or outside of the cohesion pair. That is the device. Here you see there must be 6 H2 present inside of the cohesion pair, inside of the third bracket, right? So that's why the other 3 Cl minus present outside of the cohesion pair. So these 3 Cl react with 3 Ag plus, and that's why 3 AgCl. CAgCl PPT can be formed, right? Okay, but here 1 Cl that should be go inside, and here 2 Cl minus present outside of the ionizing pair. So that's why there are 2 Cl react with 2 Ag plus, so ultimately 2 AgCl PPT is produced. So in first case 3 AgCl produced, in second case 2 AgCl produced. That means आपका जो number of Cl minus है, the number of Cl minus outside of the cohesion pair, that should be different. In first case 3 Cl minus is present because inside 6 H2 is present. That's why बाहर 3 Cl minus present. Okay, because H2O satisfy the cohesion number, 6 H2O satisfy the cohesion number, so that's why the
due to this neutralization of cobalt 3 plus 3Cl minus present outside of the cohesion pair. And that's why this Cl minus, this 3Cl minus react with 3Ag plus, ultimately produce 3AgCl PBT. Okay. And similar concept, when this 1Cl is replaced water and produce cobalt H2O whole 5Cl, whole 5Cl, and this Cl satisfy this chromium 1 positive charge, okay, and neutralize. So ultimately they are outside of the cohesion pair, there are 2 rest Cl minus is needed. ओके आपका जो अंदर का जो Cl माइनस है वो कोबाल्ट 3 प्लस का एक प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो बाहर में रेस्ट 2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? 2 Cl माइनस करेगा। तो 2 Cl माइनस react with 2 Ag plus, so produce 2 AgCl. So the number of AgCl that should be defined, that means the number of Cl minus present outside of the cohesion pair, that should be defined, and that means the water is present inside of the cohesion pair, that should be defined. So that's why the whole over the isomerism can be happen due to water. So that's why this is called hydrate isomerism. Clear? Next one, linkage isomerism. Linkage means what? Linkage means what? That means that is there must be the flexible ambidented ligand are there, or the 2 donor side generally found. आपका 2 donor side होगा, कोई किसी एक में एक डोनर साइड अटैक करेगा, कोई दूसरा में दूसरा डोनर साइड अटैक करेगा, तो उसके वजह से आपका जो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म दैट मीन्स दैट इज मच फोकस ऑन लिंक, in which position, in which side of the ligand that should be attacked with the metal, in which donor atom attack on the metal. This is called linkage. That means it is much more focused on link. That is where the linkage is there. That is in the ligand, which atom that should be react with the metal. Okay, suppose if cyanide, so C, carbon attack or nitrogen attack. If SCN, so sulfur attack or nitrogen attack. If NO2, so there must be here nitrogen attack and here oxygen attack. So the donor atom that should be defined, but the group same, NO2. Okay, and so that's why the overall molecular formula that should be same. And this type of isomerism is called as linkage isomerism. So linkage isomers arise when an ambident ligand, why? Because ambident ligand means that having more than one donor atom, and that should be can interact with the metal but not attack simultaneously. So that means आपका अगर cyanide हो, if you have cyanide, so carbon can attack, nitrogen can attack, but both never be attack simultaneously. Okay, कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, बट दोनों एक साथ अटैक नहीं करेगा. ओके, now cohesional isomerism. In complexes, when the cation and anion both are complex and they may be exchange of ligand between these and the complex ions resulting cohesion isomerism. Suppose here the complex cobalt NH3 whole 6 2 plus, right? And chromium Cn whole 6 2 minus. Okay, by this way this combination, that is this combination, neutralize each other. Okay, but now you can exchange the ligand. That means what? Cn goes to there and NH3 goes to there. So produce chromium NH3 whole 6 and cobalt Cn whole 6. Here chromium Cn whole 6 2 minus, so here that should be 2 plus. And here cobalt NH3 whole 6 2 plus, so there must be 2 minus. So ultimately the ligand exchange, due to ligand exchange the oxidation state that also be changes. Okay, so this is called cohesion pair isomerism. Okay, clear? आपका NH3 यहाँ पर जा रहा है और Cn यहाँ पर जा रहा है, तो अल्टीमेटली कोबाल्ट NH3 होल 6 था, वो हो गया कोबाल्ट Cn होल 6, एंड क्रोमियम Cn होल 6 था, वो क्रोमियम NH3 होल 6. तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज कोहेशनल आइसोमेरिज्म. Now cohesion position isomerism. How? That is in Beijing complexes. An exchange of unbeijing ligand between the two metal cation is called as cohesion pair. Cohesion position isomerism. So there must be, you have to much more focus on the Beijing. Okay,
Here suppose there must be NH2 is beach between the cobalt 3 and cobalt 3 and O2 is there, right? Okay. Okay, here I think mistake is done. Suppose, okay, sorry. Here is mistake is done. Okay, एक mistake मैंने किया, यहाँ पर Cl होगा, ठीक है, यहाँ पर O2 होगा. तो here Cl introduce in Beijing, right? And O2 that should be also engaged in Beijing. Okay, now this Cl, आपका जो Cl है, this Cl goes to here and this NH2 goes to there. Position exchange, okay, of Beijing to unbeijing ligand. आपका एक बीजिंग लिगेंड है, एक अनबीजिंग लिगेंड है. तो जब भी आपका बीजिंग लिगेंड अनबीजिंग लिगेंड से रिप्लेस होगा, मतलब एक्सचेंज होगा, दिस टाइप ऑफ isomerism is called as cohesion position isomerism. Okay, so here this Cl goes to here and one NH2 that should be goes here. Okay, so due to this the two isomerism can be found, that is called cohesion position isomerism. That means the position can be changed in between of one single entity. Okay, and that's why you get the two type of structure, where एक में आपका Cl बीजिंग है, दूसरा में NH2 बीजिंग है. Why? Because of exchange of Cl and NH2. Okay, beijing and unbeijing ligand exchange their position. That's why you get the two type of structure. This is called cohesion position isomerism. Now ligand ऐसा आपका अगर ligand का अगर आपका जो ओरिएंटेशन है वो अगर अलग है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लिगैंड बट द ओरिएंटेशन आर डिफाइंड, बट द atom connectivity that should be defined, this type of isomerism is called as ligand isomerism. Suppose 1,2-diaminopropane, which is called PN, propylamine, where the 2 NH2 is present in first carbon and second carbon, right? But here 1,3-diaminopropane, trimethylenamine, where 1 NH2 is present one carbon, then 2 carbon vacant and 3 carbon having the another NH2. Okay, so this type of ligand variation, ligand attachment can be differ in the ligand also. आपका ligand में भी आपका एटम कनेक्टिविटी डिफर के वजह से आपका आइसोमेरिज्म पाया जा सकता है. जैसे आपका PN, जैसे आपका ट्राइमिथाइलिन डायमीन और 1,2-डायमिनोप्रोपेन, तो दो में आप देखोगे सिर्फ आपका NH2 का जो अटैचमेंट है कार्बन के साथ वो डिफर करता है. फर्स्ट में आपका 1 कार्बन 2 कार्बन दैट शुड बी अटैच विद NH2. सेकेंड में आपका 1 carbon and 3 carbon that should be attached with NH2. So that means there must be only the attachment or bond linking that should be defined. And due to this bond linking of the ligand, the overall molecular formula of the ligand that should be unchanged. Okay, so maybe the PN can be attached with the metal, maybe the dimethylene diamine can be attached with the metal, but still the overall chemical formula that should be same. So that's why the isomerism can be found and this isomerism is called as ligand isomerism. So if a ligand itself exists as 2 or more isomeric form, so their complex automatically show the isomeric forms. Okay, so maybe ligand का isomeric forms होगा, isomeric कोई भी isomeric forms metal के साथ जुड़ेगा, पर obviously जो isomer होता है उसका तो chemical physical property defined होता है. So that's why the metal attach with the isomers of the ligand and show the overall isomers in the कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. मतलब क्या होता है आपका बाकी जो था, बाकी में क्या हुआ था, लिगेंड तो सेम हुआ था, पर लिगेंड का स्पेशल ओरिएंटेशन, लिगेंड का डोनर एटम, उसके वजह से आपका आइसोमेरिज्म हुआ. और यहाँ पर क्या होगा, लिगेंड खुद ही आइसोमर प्रोड्यूस कर उसके बाद अटैच हो गया मेटल के साथ. ठीक है, तो पहले आइसोमर था, बाद में भी आइसोमर ही रहेगा, और उसके वजह से आप डिफाइन स्ट्रक्चर मिलेगा in complex compound. That's why you get the isomeric form of the complex compound. Okay, suppose when you having in the ligand, if ligand present PN and this dimethylene diamine and also 1,2-diaminopropane, these two structure having same molecular formula, right? But their atom connectivity differ. But when these two are attached with the metal, the structure never be same. The chemical properties never be same. The physical property never be same. The boiling point, melting point never be same. So that means the complex compound also produce similarly isomers. Okay.
Last one, which is not so important, polymerization isomerism. Okay, polymers are not real isomer. Actually, these polymers in the complex compound are not real isomer. Polymer can be exist where आपका polymer chemistry आप पढ़ोगे, when I will teach to you that is about polymer chemistry. On that case, you see that is polymer obviously exist. So many repeating units, so many monomer that should be attached with it and produce the bigger molecule that is called polymer. Okay, and not only that, you can study in the bioorganic chemistry where the protein itself is a polymer, because amino acid linked with each other by peptide bond to produce ultimately optimal level, that is to produce प्रोटीन. ओके, अमीनो एसिड से पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड होता है, इसके बाद आपका प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन इटसेल्फ इज अ बायोपॉलीमर. ओके, बट स्टिल in the complex compound, actually in the complex compound cohesion chemistry, this polymerization isomerism, that is not real. Okay, the isomer have same empirical ligand instead of molecular formula, same empirical ligand hoga, but all these isomer have the same ratio of metal ions and ligand in them, same metal ions होगा. Okay, suppose platinum NH3 whole twice Cl2, तो there must platinum 2 plus भी एक होगा, NH3 दो होगा, Cl दो होगा, तो रेशियो होगा आपका मेटल इज टू टू लिगैंड, दैट इज 1:2:2. ओके, यहाँ दो मेटल है, प्लैटिनम दो मेटल है, तो यहाँ 2 मेटल, प्लैटिनम 2 प्लस, NH3 4 है, Cl माइनस भी 4 है, इसका रेशियो क्या होगा 2:4, राइट. तो इससे भी आप अगर शॉर्टकट करें, 2 से अगर डिवाइड करें तो 1:2 होगा, राइट. तो सेम रेशियो होगा. ठीक है, मेटल इज टू लिगेंड, मतलब दो लिगेंड अगर डिफर करता है तो लिगेंड इज टू लिगेंड होगा, अगर एक ही लिगेंड हो तो मेटल इज टू लिगेंड होगा. ठीक है, क्लियर. तो प्लैटिनम NH3 होल 4, प्लैटिनम हेयर that is, you see that is 2 is there, that means overall the complex that platinum is present actually 3, here 2, here see there must be 2 is present, that means this platinum here actually this complex is basically 2 NH3 whole 3 and Cl3, two times are present this complex. Okay, so that's why platinum here 2 platinum 1 platinum. Okay, so ultimately here 3 platinum is present, here 4 NH3 and 3, here 2 times of NH3 is present obviously, so 3 into 2, that is, देखो platinum NH3 whole 3 Cl3 and 2 times, that means nothing but that is platinum NH3 whole 3 Cl3. Okay, into platinum NH3 whole 3 Cl3, this 2 times is present. Okay, so 3 platinum, here you see 4 NH3, 3 and 3, that means 6 and 4, that is 4 NH3 and 6 is there. I think there must be mistake is there. Okay, Cl3. Okay, here mistake is there. Okay, I have to check. Okay, here mistake is there, आपका यहाँ पर मिस्टेक है. नेक्स्ट वन प्लैटिनम एंड प्लैटिनम, दे आर 3 here also I typing mistake. Okay, I will check these two. Okay, so I will check. So फर्स्ट टू आप देखो तो फर्स्ट टू में रेशियो सेम होगा 1:2:2. तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमर
आइसोमेरिज्म। ओके, मैं जो लिखा है, जो दो एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल गलत लिखा है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, आई विल चेक। ये जो दो एग्जाम्पल है, आई थिंक दिस आई विल मिसिंग समथिंग। ओके, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर में कुछ मैंने मिसिंग कर दिया, मे बी फार्मूला में, मे बी लिगेंड में, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ही ठीक नहीं दिया, तो आई विल चेक दिस टू। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट आई टेल अबाउट यू, आपको पहले क्या बोला, आइसोमेरिज्म आज का जो चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कराया। उसके बाद जब ऑप्टिकल और स्टीरियो आइसोमर होगा तो वहाँ पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। So isomerism nothing but that is a chemical formula that should be same, but that structure or atom connectivity or atom spatial orientation, that should be a donor atom, that should be different. Okay, and that's why automatically the chemical properties, physical properties, melting point, boiling point, all should be changes. Isomerism basically two type. One is structure isomerism, other is stereoisomerism. Structure isomerism, that means their bond connectivity differ. Okay, and stereoisomerism, there must be bond connectivity that should be same, but spatial orientation that should be defined. Okay, structure isomerism following so many category, that is ionization isomerism, hydride isomerism, linkage isomerism, cohesion isomerism, cohesion position isomerism, ligand isomerism, polymerization isomerism. And stereoisomer, that is geometric isomerism and optical. So structure isomerism, first one, ionization isomerism, there must be due to the presence of the ion which is present outside or inside of the coherence pair. Due to this, the PPT can be differently formed. So that's why some isomerism can be happen. This is called ionization isomerism. Then hydride, that is we differ on the number of water molecule present in the inside of the coherence pair. आपका water molecule in coherence pair में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है hydride isomerism. Okay, linkage isomerism, that means ambident ligand which donor atom that should be attached with the metal, depend upon on it the isomerism can be happen. This is called linkage isomerism. Then cohesion isomerism, there must be nothing but there must be two defined cohesion pair will be there and the ligand will be exchanged. Suppose first example, that is cobalt NH3 whole 6 and chromium CN whole 6. There must be the CN goes to cobalt, goes to the cobalt, CN goes to the cobalt and NH3 goes to the chromium. So ultimately there must be two defined, again complex entity can be produced and their combination and the previous combination respective to each other as a isomerism. Okay, आपका जो फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है दो एंटिटी का और सेकंड वाला जो कॉम्बिनेशन दो एंटिटी है, ये आपस में क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमर होता है, ठीक है। ओके, next one, cohesion position isomerism. Cohesion position isomerism, there must be the exchange between the beijing and unbeijing ligand. आपका beijing ligand और unbeijing ligand exchange होगा, उसके वजह से आपका जो isomerism होता है उसको बोलता है cohesion position isomerism. Now ligand isomerism, ligand itself make isomer and due to this the in the complex compound isomerism can be happen. This is called ligand isomerism. जैसे आपका 1,2-diaminopropane और आपका 1,3-diaminopropylamine 1,2-diaminopropane and 1,3-diaminopropane, where the only the attachment of the NH2 present in the carbon that should be different, and due to this the overall complex compound show isomerism. Okay, so this is called ligand isomerism. And last one, polymerization isomerism. There actually this is not realistic. There ultimately the metal is to ligand जो आपका रेशियो होगा वो सेम होगा, तो this type of isomerism can be called as polymerization isomerism. अगर आपका ligand डिफर हो तो ऑब्वियसली एक सब ligand एक कैटेगरी में आप नहीं कंसिडर करोगे. सो प्लैटिनम NH3 Cl अगर हो तो आपका प्लैटिनम का रेशियो इज टू NH3 का रेशियो इज टू Cl का रेशियो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है. अगर आपका प्लैटिनम के साथ सिर्फ अगर एक ligand जुड़ा होता है NH3 तो आपको सिर्फ लेना है प्लैटिनम इज टू दिस NH3 रेशियो. ओके, तो दिस टाइप ऑफ रेशियो यू हैव टू टेक. ओके,
एंड जो आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है तो हाइब्रिड आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोएशन आइसोमेरिज्म, थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, एंड लास्ट वन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू CSINET, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू बार गेट, WB set, MSc final exam, PSc final exam, this all over the structure isomerism not so important, but yes you have to know because of knowledge, maybe कोई पिछले बार नहीं आया पर इस बार आ जाए, हो सकता है, राइट। सो दैट्स वाई यू हैव टू लर्न अबाउट दिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो मैं नेक्स्ट डे कराऊंगी, ठीक है। तो इन नेक्स्ट डे आई विल टॉट ऑन stereoisomerism, where basically the optical and geometric isomer both are important. Okay, thank you.